Hello everyone, I'm going to show you all how to install Packet Tracer today. So we'll see how to install Packet Tracer. We'll click on Packet Tracer. For a message to click yes, we'll say yes. I accept the agreement and I say next, next, next. We'll say next. It is by default installing to C drive program files. We'll say install. It's getting installed. So installation of Packet Tracer has been completed. It is showing us Cisco Packet Tracer. You have to register or log in with the email ID, or else you can do one thing. You can click on guest login. So showing us few seconds. Guest login 7 seconds. We click here. Confirm guest. Says Windows Defender is allowing to. It is blocking by default some of the features. So we'll say allow access to Windows Defender. For example, we'll take a series of router 26200 or any other series whichever I want. Or I'm taking another series of router 26200. We'll take NM4AS module. We'll switch off the power. We'll drag the packet tracer. We'll start the power again. We'll go on another router. We'll switch off the power. We'll take NM4S or NM48, whatever I want. For example, I'm taking NM48. We've started the. I'm going to connect this two routers. I'm going to take a serial DC cable. I'm clicking on serial interface 1 by 0. Second interface on serial 1 by 0. I will attach a switch. I will take any series of the switch. I've taken two switches. I'm going to add a PC. I will take one more PC. Connect this switch. Fast Ethernet. Fast Ethernet. Fast Ethernet. Router PC to switch. I'm attaching. See, here we have attached two PCs, one switch, and two Cisco routers. Now, suppose you want to assign an IP address to the PC. We'll click onto this. We'll click on desktop. We'll click here. Suppose, for example, I'm assigning the range of class C IP address 192.168.10.2 and default gateway is 192.168.10.1. अभी 10.1 हमने क्यों लिया? This is the default address of my Ethernet port of my Cisco router. We'll assign the same address over here, that is 192.168.10.3. अगर हम सेम एड्रेस देंगे तो हमें IP कॉन्फ्लिक्ट मैसेज मिलेगा, एरर आएगा 192.168.10.1. We have assigned the IP address to this. Other PCs, we'll go to desktop, same.
192.168.11.2 by default subnet mask. 192.168.11.1 as a default gateway. Go on to the PC, we'll click on desktop, 192.168.11.3, 192.168.11.1 as the default gateway. So we have assigned an IP address to the PC. Now we'll move to router, click on CLI mode. See, would you like to enter initial configuration? This is the questionnaire mode where it is asking us a question. Dialog box will say here no. We'll press enter. This is a user mode of a router. We'll write here the command enable, enter. Suppose I want to increase the font size of this, I will go to preferences, font, will increase the font, say apply. The router, you can see the font size has been increased. This is the user mode, this is the privilege mode. Show flash is the command to check the IOS, the flash memory, available size, and the iOS version which will be used with this router. कौन सा iOS version यूज़ हो रहा है यहाँ पे दिखा रहा है वो. Even we can give a command show version. You can see here version 12.2 देख सकते हैं हम यहाँ पे. Show interface is a command to check all the interfaces. See यहाँ पे दिखा रहा है मुझे interfaces. देख सकते हो आप यहाँ पे. कैन सी हियर सीरियली डाउन दिखा रहा है मुझे. ऐसे करके सारे इंटरफेसेस है. और एक कमांड है शो आईपी इंटरफेस. ब्रीफ इज़ अ कमांड विच विल शो यू हाउ मेनी इंटरफेसेस. ये देखो ये इंटरफेसेस है. यहाँ पे आप इंटरफेस पास इंटरनेट 0/0, सीरियल 1/0, 1/1, 1/2, 1/3. अब इसको हमको आईपी अगर देना है सीरियल 1/0 को तो कैसे करेंगे हम. तो विल से कॉन्फिग T and will write here the command interface serial 1/0 and we'll set an IP address 10.0.0.0.1 space subnet mask 255.0.0.0. We'll assign a clock rate over here. For example, we are taking clock rate 64,000 and we'll say no shut exit. फिर हम वापस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में जाएंगे 0/0 और उसको IP एड्रेस देंगे. IP address 192.168.10.1 space subnet mask 255.255.255.0 and we'll give here no shut to activate the port. We'll say Control Z and WR to save. Show IP interface. ब्रीफ इज द कमांड इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं IP एड्रेस असाइन हुआ. देखो यहाँ पे असाइन हो गया. ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन असाइन एन IP एड्रेस टू योर राउटर. देन सेम वे वी हैव टू गो टू सेकेंड राउटर और यहाँ पे भी हमको IP एड्रेस असाइन करना. विल से नो enable config T interface serial 1/0 IP address 10.0.0.2 space 255.250 sorry class
पास एक है 255.0.0.0 असाइन ये रहा क्लॉक रेट 64,000। यहाँ पे एक मैसेज देगा हमको with this command applies only to the DC end. This is the DT port of our router. फिर go to we'll assign here no shut command. इसे देखिए आप हो गया ये। फिर से exit and interface fast ethernet 0, interface fast ethernet 0/0, IP address 192.168.11.1 space subnet mask 255.255.255.0 and no shut down will say exit control Z WR सेव करने के लिए show IP interface brief C एक्टिव हो गए बाई डिफ़ॉल्ट। देखो यहाँ पे अप हो गया। अब यहाँ पे भी जाएंगे सेकेंड राउटर पे हम। देखो यहाँ पे डाउन दिखा रहा था, अब देखो यहाँ पे स्टेट अप हो गया है। सो विल गिव हियर कमांड शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो अप हो गया और इट वाज शोइंग मी डाउन क्योंकि सेकेंड राउटर पे कॉन्फ़िगर करने के। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िग टी राउटर रिप और यहाँ लिखेंगे हम वर्जन 2 एंटर और यहाँ पे खुद के नेटवर्क इंटरफेस के बारे में बताना नेटवर्क 10.0.0.0.0 नेटवर्क 192.168.10.0 फिर से कंट्रोल Z है WR। अब देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ कि रिप डालने के बाद डिफरेंसेस क्या होता है। शो IP रूट कमांड देता हूँ मैं, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, C दिखा रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शो IP रूट, देखो फिर भी डाउन दिखा रहा है, डायरेक्टली C दिखा रहा है। अब चेंजेस जब राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो जाएगा दोनों राउटर पे तो क्या चेंज होकर देखते हैं। कॉन्फ़िग टी राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.0.0.0 और स्पेस नेटवर्क 192.168.11.0 फिर से एंटर कंट्रोल Z WR करेंगे एंड शो IP रूट कमांड देंगे हम। ये देखिए R हो गया यहाँ पे, शो IP रूट कमांड देंगे हम। ये देखिए R हो गया यहाँ पे। लेट अस पिंग एंड चेक इट आउट कि हमारा मशीन पिंग हो रहा है क्या। विल गो टू CMD कमांड प्रॉम्प्ट एंड विल से पिंग 192.168.10.1, ये हमारा गेटवे पिंग हो रहा है। फिर हम इसके बाहर जाएंगे, विल गो टू राउटर 10.0.0.1, लेट अस चेक, ये देखिए भी पिंग हो रहा है। अब हम सेकेंड राउटर पे जाएंगे, सेकेंड राउटर भी पिंग हो रहा है। अब देखिए हम पीसी राउटर के गेटवे पे जाएंगे 192.168.168.11.1, देखिए इसको भी पिंग हो रहा है। अब हम पीसी को पिंग करेंगे, देखिए इट इज़ टेकिंग सम टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट आया और अब देखिए सो आई एम एबल टू पिंग फ्रॉम दिस PC to this PC into network. So this means the whole network has been configured और सब पे रिवर्जन 2 चल रहा है। इस तरह से हम रिवर्जन 2 इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। विल स्टॉप हियर।